Let's turn from Odisha to Vidarbha because that is where the election kicks off in Maharashtra this week. Remember, Vidarbha has in the past been at the heart of farmer suicides, and the situation in rural Vidarbha remains one of scant comfort to farmers. And in Nagpur itself, you have the BJP heavyweight Nitin Gadkari contesting. Is there a rural-urban divide in parts of the state of Maharashtra like Vidarbha? Sahil Joshi now reports. देश जवान पर गर्व करता है, देश किसान पर गर्व करता है. In 2014, the Prime Ministerial hopeful Narendra Modi had spent 18 minutes addressing farmers in his first rally in Vidarbha at Wardha. अन्न सुरक्षा की गारंटी देता है. The star campaigner of the BJP, the Prime Minister, in 2019 chose to play the Hindu nationalism card. Farmers this time got only 3.5 minutes. कांग्रेस ने हिंदुओं को अपमानित करने का जो पाप किया है, देश की मूलधारा को कलंकित करने का प्रयास किया है, कोटि-कोटि देशवासियों को दुनिया की नजरों में नीचा दिखाने का पाप किया है. Vidarbha, with 11 districts and 10 Lok Sabha seats and 20% of the state's population, is the new power centre of Maharashtra politics. It is also the land hit by perennial drought issues. But all development work, it seems, is concentrated around the two districts of Nagpur and Chandrapur. एक सवाल आप सबसे ये भी पूछना है कि आप ये बताइए कि आप में से कितने लोगों ने जो बीमा होता है, अपने फसल का बीमा होता है, कितने लोगों ने फसल का बीमा निकाला हुआ है? अगर हाथ खड़े करके बता दे, कितने लोगों ने फसल का बीमा निकाला? बीमा निकालने का फायदा क्या हो रहा है, ये सरकार हमको नहीं बता रही है. बरोबर तो हम बीमा निकाल के क्या करेंगे? अच्छा, कर्जा कितने लोगों पर है आपके यहाँ पर? कर्जा कितने लोगों पर है? सभी पे है. सभी पे? हाँ. कितना कर्जा है आपका? मेरे ऊपर 70,000 है. 70,000 कर्जा है. हाँ. लेकिन अभी जो कर्ज माफी हुई है उसका कितना मिला? कुछ भी नहीं हुआ, 1% भी नहीं माफ हुआ है. पूरा का पूरा वैसी की वैसी है. The reunited Congress NCP this time is heavily banking on the caste and community combinations like the other backward caste, Kunbi Dalits and Muslims to regain its past position in Vidarbha. विदर्भ का किसान हाथ जोड़कर कर्जा माफी मांगता है, आत्महत्या करता है, परिवार नष्ट हो जाते हैं. अरुण जेटली जी जवाब देते हैं किसान का कर्जा माफ करना हमारी पॉलिसी नहीं. You can see the power of BJP in Nagpur today, but there was a time that Nagpur, even though which gave birth to the Rashtriya Swayamsevak Sangh, was the stronghold of the Congress party. Today, the BJP can claim that the Chief Minister of Maharashtra and the strong Union Minister Nitin Gadkari has been given by Nagpur. But still, the RSS had this issue with the Nagpur that the Congress used to get all the seats of Assembly and the Nagpur Lok Sabha seat from here. The presence of BSP and Prakash Ambedkar's Vanchit Agadi could pose challenge for the Congress NCP alliance. Otherwise, in places like Chandrapur, Amravati and others, the fight is between BJP Shiv Sena and Congress NCP alliances. With camera person Sai Prasad Patil and Sahil Joshi in Nagpur, Bureau Report, India Today. Thanks for watching the video. For more such news and updates, please like, share and subscribe to India Today. Also check out our other great videos from our channel. We know you will love to.